तो हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एरोक्स मोटो जीपी एडिशन के डिलीवरी के बारे में। ओके, सो दिस स्कूटी इज़ बेसिकली नॉट माइन, इट्स माई डैड स्कूटर एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ ही इज़ apparently busy and I'm gonna go ahead and take the delivery of this scooter. Okay, so another thing, people who are here for my expulse, so I have got multiple mods coming and one of them is delivered to me today. So this is basically the tail of the bike which I've ordered. It's called a dirt bike tail or something. So what we'll do is we'll go ahead and unbox this. Yeah, so as I was saying guys, it's delivered to me now. अभी ये tail आ गया है। इसका installation video मैं जल्दी बनाऊंगा। ओके, तो unboxing करते हैं इसकी। So it is packed very well guys. Okay, I have ordered the transparent one. I like the transparent one more. ठीक है, थोड़ा एस्थेटिक भी दिखता है और बाइक का कलर के साथ आई होप ये मैच करेगा. Okay, so I'm gonna make another video of this installing it and how it works. So it will be later on. For now we'll go ahead and take the delivery of the Aerox guys. So without further ado let's go. तो गाइस आई फाइनली रीच द शोरूम. बहुत नॉइजी है यहाँ पे रास्ते पे. ठीक है, तो पसीना. सो बेसिकली ये मोटो जीपी एडिशन का जो कलर है ये हर जगह अवेलेबल नहीं था, तो मीरा रोड तक आना पड़ा मेरे को. तो यहाँ पे अवेलेबल है. आ गया अपना गाड़ी. लेट्स गो. So all the paperwork has been done guys finally. So ये रही स्कूटी. सो बेसिकली गाइस आई हैड टू कंटिन्यू द वीडियो अनदर डे, क्योंकि शाम हो रही थी, बहुत ट्रैफिक भी हो रहा था एंड रात भी होने आई थी, तो गोप्रो इतना सही से रिकॉर्ड नहीं करता है नाइट लाइट में. सो आई जस्ट शो यू अ वॉक अराउंड एंड देन एक POV और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं बाइक के बारे में, स्कूटी के बारे में. सो लेट्स गो. सो या दिस इज़ द स्कूटी बेसिकली गाइस. जस्ट गिव यू अ नाइस वॉक अराउंड बिकॉज आई रियली couldn't कंटिन्यू the same day.
again, you know, our rally bike. Again, I like the small detailing about these bikes. इसमें बहुत छोटे छोटे details है. You can see the Yamaha logo is little bit bronze in color. I don't know it has any meaning to it or something, but yeah. और इसकी चाबी भी मैंने दिखाई थी शायद, but it is very unique. If you all have seen any old Yamaha bikes, you all know this plastic never used to come. It was just a steel key and the logo on the top. So I like the key of this scooter also. Okay, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली बहुत दिस इज़ मेन्यू बटन गाइस. इसमें मेन्यू का ऑप्शंस है बहुत सारे. थिंक इट से सर्विस एंड ऑल, एवरेज कितना है. Has all this information in it. Okay, this is side light. On. Again, this is basically a hybrid option. When you stop somewhere, the scooty का engine basically stops working, and when you give a little bit of accelerator, the engine starts working again. तो ये भी अच्छा ऑप्शन फीचर दिया हुआ है. Okay, also the starter of the scooty is very very smooth. It's like a one touch start. Okay, I'm just gonna show you all. Doesn't make that loud starter ka noise. Also, another thing, the rims of these scooties, this scooty is amazing. Even the front, they look pretty amazing. It's got a single channel ABS system. Okay, I guess those rims are 14 inches or something. So you all can expect that kind of quality. It's got a DRL also in the front. Again, the levers are in steel finishing. I don't think even my Xpulse has it. It's a very shitty. So talking about the button, it's got two buttons. Okay, this is the fuel gauge. Yes, it's a maxi scooter, so जो fuel का tank होता है वो आगे है. Wow. Okay, and this is for the seat. So it's a massive boot guys. सब ऐसे ही डाला है, हेलमेट भी उल्टा है तो भी सब अंदर है. And it's super deep also. You can see half of my forearm is in. Okay. Dogs are very annoying. बार बार भौंक रहा है. Again, it gets a Yamaha logo on the back. It's in bronze kind of finishing. Okay, so let's go ahead and ride the scooter guys. I'll just give you a quick glimpse of how it rides.
other thing is that foot placement is pretty adequate. मतलब मुझे लगा था कि थोड़ा कम जगह होगा पैर रखने के लिए. It would have been better if it was little wider, but then it is fine. It doesn't make you feel that it's small or something. Just does the job. Feel that the suspension setup is a little bit on the harder side. मतलब थोड़ा hard है suspension, but I think it will work well on higher speeds because ये स्कूटी हाई स्पीड पे जाने के लिए easily capable है. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको. Okay, so keeping that in mind, and I don't think should make a lot of issue. Just it's little bit hard. बट अगेन आई यूजुअली राइड एक्सपल्स रैली, तो और उसके पहले भी मेरे पास हिमालयन थी, तो आई एम नॉट सो श्योर. आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई फील. Again, the road presence also of this bike is good. People do look at the scooty. Something like this is a must have, especially if you are living. अगर मुंबई जैसे सिटी में रहते हो तो भाई आपको पता है कि मतलब कितना ट्रैफिक होता है. सो इट्स नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू टेक अ कार आउट और समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो वेंट अहेड एंड बॉट अ गुड स्कूटर. ओके, तो जब भी ज़रूरत हो तो मतलब डैड ले जा पाए. दैट्स व्हाट द मेन गोल इज़. बेसिकली R15 का इंजन आता है, तो दिस मेक्स अराउंड, आई थिंक दिस मेक्स अराउंड 15 bhp और समथिंग, सो दैट इज़ गुड इनफ फॉर अ स्कूटर. रोड्स आर रियली अनइवन. ठीक है, द स्कूटी रियली पिक्स अप द पेस वेल. मतलब अंडर पावर्ड वाली फीलिंग तो नहीं आएगी इसमें, स्पेसिफिकली फॉर अ स्कूटी. The company claims average around 45 or something, so 45-50 ऐसा कुछ कंपनी क्लेम करती है. ठीक है, so that's also one thing to keep in mind if you all want a good average. I think R15 is a well-known engine for that also. ठीक है, R15 का जो इंजन है 150cc का, it's a well-known engine to give you good average also, so you all don't have to worry about all that. Okay, again the throw of the scooter at night is extremely well. ठीक है, रात को मैंने ये स्कूटर चलाया, इसका जो हेडलाइट है वो बहुत ही मतलब वाइड है, ऐसा वाइड व्यू देता है आपको. ठीक है, इट्स गुड इनफ. आई डोंट थिंक मतलब ये प्राइस में इससे अच्छा कुछ आपको मिल पाएगा. ठीक है, द थ्रो इज़ वेरी वेल. इवन माई एक्सपल्स का थ्रो इज़ नॉट दैट गुड इन फ्रंट ऑफ दिस स्कूटी. So again, that is the go-to. I like the headlight of this scooter. Talking about the side view mirrors, they don't do like super great job. That's what I feel. It's adequate. It's not something to, not something extraordinary or that. It's a very small kind of view and just not enough, I feel. So that's something to upgrade if you get this scooter. It's that the side mirrors are very small. स्कूटी का पावर डिलीवरी एकदम लीनियर है गाइस, एकदम स्लोली नहीं, मतलब
So building up very well. Like just keeps taking up the pace. Again the rims are little bit bigger. Rims बड़े हैं तो आपको मतलब कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग करना है तो आप कर सकते हो. ज़्यादा आपको मतलब डर नहीं लगेगा. It would be very confident in terms of that. The cop ahead. So yeah, there you go guys. I think I'm gonna end the video now. So again, if you all have any questions regarding the scooty or anything, go ahead and comment down below. Also stay tuned for my upcoming mods on Express and some trail riding. So if you all like the content, please go ahead and subscribe. It would help me a lot. Okay, so thank you guys.